हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पी स्क्वायर। आए दिन हम देखते हैं कि कभी चोट लग गई, कभी हम गिर गए, कभी सूजन आ गई, कभी ठोकर लग गई। ये सब छोटी मोटी चीजें घर में चलती रहती हैं। एक मेडिकल पर्सन जानता है कि इसके साथ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट अबाउट नॉन मेडिकल पर्सन्स? यस, दे कैन ऑल्सो हेल्प इन दिस। फर्स्ट 24 से 48 आवर में एक नॉन मेडिकल पर्सन सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को ट्रीट कर सकता है विद स्टमक। ऑफ कोर्स कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जिसके अंदर हमें मेडिकल इमरजेंसी को सीक करना चाहिए एंड विच इज नेसेसरी, वी विल टॉक अबाउट दिस। और जो फर्स्ट ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड जो हम देते हैं फॉर द सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, दैट मेथड इज नोन एज राइस। खाने वाला राइस नहीं, RICE, रेस्ट, आइज, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। आज इस मेथड के बारे में हम बात करेंगे। पूरी डिटेल मैंने अपनी तरफ से देने की कोशिश की है। स्टिल यू थिंक कि कुछ रह गया है एंड यू नीड मोर डिटेल, प्लीज कमेंट बिलो, लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। व्हाट इज द प्रॉपर मेथड? इसके लिए कोई भी मेथड या सर्टिफिकेशन की नीड नहीं है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू सी अ डॉक्टर बिफोर ट्राइंग द राइस मेथड. You can begin immediately after an injury and continue treatment for next 24 to 48 hours. किसी को भी चोट लगती है तो ये ट्रीटमेंट आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू द ट्रीटमेंट फॉर द नेक्स्ट 24-48 आवर. When can one seek medical care? अगर आप देख रहे हैं कि जिसको चोट लगी है, दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट इंजर्ड पर्सन कैन नॉट पुट एनी वेट ऑन द अफेक्टेड एरिया, जहाँ पर चोट लगी है वो उस पर वेट बेयर नहीं कर पा रहा है, यू शुड सीक मेडिकल केयर इन दैट केस. इफ दैट पर्टिकुलर एरिया इज नम और मिस शेपन, उस पर्टिकुलर एरिया की शेप में कुछ चेंजेस लग रहे हैं, आपको कलर में चेंजेस लग रहे हैं, नमनेस इंक्रीज हो रही है, तो उस टाइम पर आपको मेडिकल केयर के लिए जाना चाहिए. और नेक्स्ट, इफ़ द इंजरी इज़ रिकरिंग, अगर इंजरी उस पर्टिकुलर एरिया पे दोबारा हो गई है तो यू शुड सीक मेडिकल केयर. इट इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माइल्ड टू मॉडरेट इंजरीज. This is the most useful method. Doctors usually recommend the RICE method for number 1, sprain. People often sustain sprain by tripping, falling, or through sudden twisting motions. Second, strains. Repetitive movements and lifting heavy objects the wrong way. These things can cause these strains, bruises, and other soft tissues injury. These are basically indications you can see for the RICE treatment. When is RICE not effective? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राइस हम सारी सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. देर आर सम कंडीशंस वहाँ पर हम राइस को नहीं हमें लगाना चाहिए. द मेथड इज़ not recommended to treat broken bones or more serious injuries to the soft tissues injury. These conditions may require medication, surgery, or any extensive physical therapy. So you should not go for RICE treatment in that particular scenario. Now talk about what is RICE treatment method. RICE basically stands for rest, ice, compression, and elevation. And taking these simple steps following a strain, sprain, or any other similar injury can help you more quickly recover and get back to everyday activities. Let's learn about this method. Number 1 is rest. Basically, it starts immediately after the injury. Immediately rest the affected area as much as possible. Experts recommend 24 to 48 hours of no weight bearing on that particular area. 24 से 48 आवर तक आपको उस पर्टिकुलर एरिया को प्रॉपर रेस्ट देना है, उस पर कोई वेट बेयरिंग नहीं होनी चाहिए. कंटिन्यू यूज ऑफ अ मॉडरेट और सिवियरली स्प्रेन एरिया कैन डिले हीलिंग, इट कैन इंक्रीज पेन और इवन वर्सन द इंजरी. With mild sprain, activity is generally tolerated after 24 to 48 hours with a mild sprain thing. Rest the injured area, avoid moving it, try to keep weight off, use splints, braces, canes, or crutches. Wherever is the available, rest that particular area. Next comes ice. Ice basically help to reduce the pain or swelling during the first 48 hours after the injury.
Ice that particular area for at least for 20 minutes at a time. Every 4 hour ice is needed. It is recommended. Using an ice pack covered in a towel. If you don't have an ice pack handy, or it's not available here, or something is not availability is there, then alternatively you can use a bag of frozen peas, corn, or any other veggie. You can use these things. Try not to ice the injury for more than 20 minutes at a time, as it may actually cause further tissue damage. This step is basically necessary for first 3 days. One thing is to remember, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, नेवर अलाउ आइस टू टच द स्किन डायरेक्टली. जो भी आप आइस पैक यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई फ्रोज़न पैक यूज़ कर रहे हैं, ऑलवेज कवर दैट. You can use a wrap, you can use a towel or simple any cloth. Do not touch that particular bag or something directly to the skin. Is compression. Yes, we need to compress the area. We need to bandage this particular area using an elastic medical bandage. Wrap the area to help decreasing the swelling and internal bleeding if present. The wrap should not be snug, but make sure you have proper circulation. How can we check the circulation is okay or not? Some signs that the bandage is too tight include numbness, tingling, increased pain, coolness, or the swelling. If you're thinking you need to use the wrap for more than 48 to 72 hours, you may have to more serious issue that requires promote medical attention. Elevation reduces the swelling and bruising by making it more difficult for the blood to reach the injury. Experts say it is the best to elevate the area for 2 to 3 hours a day. पर थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर RICE को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वेरी ब्रीफ. फर्स्ट इज R, रेस्ट. वी शुड मेक द इंजर्ड पार्ट रेस्ट for at least 24 to 48 hours. Then is ice for 20 minutes at a time, 4 to 8 times per day. C, compress. It is to help reduce swelling. E, elevation. The injured limb is supposed to be above the heart level, or you can say 6 to 10 inches above the heart. In this way we can apply the RICE method.